Okay, boys. So now, all right. Are you guys ready? Everybody? Yes, sir. Okay. Now I would appreciate if you guys just listen to me very carefully and please do not interrupt or talk while I'm delivering you a message because it's being recorded. Okay? Yes, sir. All right. That's great. So the first thing, if you guys remember in the previous classes that I was talking about Unit 1 oral communication, right? So we had been talking about oral communication, and I have delivered you a detailed lecture on that. But as a matter of fact, since this is being recorded now, so I'm going to start this from the very beginning. Are you guys ready? Yes, sir. Okay, proper. Now, what is oral communication? Oral communication means any communication that carries out between the two parties, like verbal. The second name for oral communication is verbal communication, okay? Anything which is not in a written form is known as a oral communication. So, do we understand what oral communication is now? Pata chal? When I ask you a question, I need your answers, all right? So I'm asking you that do you understand the difference between a verbal, oral, and a written communication now? Yes, sir. Okay. Two individuals. Okay, now we will define it like this. When two individuals talk to each other without writing any sentences, it's just like I'm talking to you right now, and I'm talking to you and you are talking to me. I'm asking you questions and you are answering me back. Now this is called communication. But at the same time, if there's nothing written involved into the conversation of the two parties, that will be known as an oral communication or verbal communication. Got it? Yes, sir. Okay, perfect. Do you want me to say that in Urdu? Yes, sir. Okay. Okay, let's put it this way. जब भी दो पार्टीज आमने सामने एक दूसरे की आती हैं, तो वो जब एक दूसरे से बातों में इंगेज होती हैं, तो उसको कहा जाता है ओरल कम्युनिकेशन, यानी बातचीत वो जिसमें रिटन मटेरियल इस्तेमाल ना हो. अब समझ आ गई बात की? ओके, आम लाइफ में जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, यार तुम्हारा क्या हाल है, तुम कहाँ रहे हो, ये अब यहाँ पर रिटन कोई चीज नहीं है, ये हमारी बातचीत है. ठीक है? तो इस बातचीत को जो है वो अंग्रेजी में हम ओरल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी एक दूसरे से राब्ता जो है वो जो रिटन फॉर्म में ना हो, जो ज़बानी फॉर्म में हो, उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहेंगे. Got it? Yes, sir. Okay. Now, second thing we get on Unit 2, that is oral presentation. Now, we have talked about this in previously. Anything that you try to explain to a person, from a person to a person, or a group of people, that you talk on a certain topic would be called a presentation. When you try to explain a subject, that is called presentation. उर्दू में कहूँगा आपको कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दो पार्टियों के दरमियान हो रही है और आपको किसी एक पार्टी को समझाना पड़े किसी चीज़ को, तो उसे हम प्रेजेंटेशन कहेंगे. ठीक है? यानी ये प्रेजेंट से निकला है कि आप अपने आप को, आप एक चीज है वो अपना एक मुद्दा बयान कर रहे हैं किसी के सामने. ठीक है? किसी चीज की एक्सप्लेनेशन बयान कर रहे हैं, तो उस चीज को हम प्रेजेंटेशन कहेंगे. और यहां पर उसके साथ एक लफ्ज लग गया है ओरल. सो ओरल मीन्स ज़बानी.
तो ज़बानी कलामी जो बात हो रही होगी, जो आपसे क्वेश्चन या किसी चीज़ के बारे में आपको कोई एक्सप्लेनेशन किसी को देनी होगी, तो वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस वक़्त, तो हम उसको दफ्तरी ऑफिशियल लैंग्वेज में उस ज़बान में हम इसको प्रेजेंटेशन कहेंगे. सो दैट विल बी नोन एज एन ओरल प्रेजेंटेशन. गॉट इट? Yes, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Beautiful. Okay. Now we have talked about this in the past. So I'm just trying to, since this lecture is being recorded, so this is why I'm trying to get over it from the top to bottom once again. ठीक है? ये हमारी इस पे पहले भी बातें हो चुकी हैं प्रीवियस क्लासेस में, मगर चूंकि ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हमारी ओरल प्रेजेंटेशन या ये भी जो भी हमारी आज की जो टॉपिक है उसको बार बार हम रिपीट करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. इसको उर्दू में भी इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि ऑनलाइन क्लास है, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि या वो फार फ्लंग एरियाज में रह रहे हैं या कुछ ऐसे, या जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही या इतनी अंग्रेज़ी की समझ नहीं है. तो जैसे मैं क्लास में भी पहले भी आपको कहता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, मगर इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश में मुझे आपके जवाब बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं ताकि मुझे भी पता चले, मगर एक्सप्लेन मैं आपको शायद दोनों ज़बानों में करूँगा ताकि आपको कोई इसमें डाउट्स ना रहे. इज़ दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, इसके लिए कोई बुक नहीं है, sir. बुक तो हमारे पास करिकुलम की है. We have the curriculum book and we can only explain it through that. Alright, but what I'm going to do is I'm going to send you guys the slides. I'm going to make out slides of the of our course outline, and I will send them to you. Okay? Everybody clear? Yes, sir. Yeah, that's beautiful. Okay, I like this attitude. So हम ऐसे करेंगे कि मैं आपको इनकी डिफरेंट पैराग्राफ्स में बता दूंगा, उसको लिख दूंगा, ठीक है, उसकी स्लाइड बना के आप लोगों को मैं वो अपलोड कर दूंगा, एंड यू विल हैव टू फॉलो दैट. ओके? Okay, now unit 3 we are talking about vocabulary. Now see, vocabulary is something which is like जिसको आप एक यादाश्त भी कह सकते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम समझ, इसको हम क्या कहेंगे? समझ. यानी आपकी जो जहन में एक जगह में एक चीज़ जमा हुई होती है, एक चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, उसको हम लफ्ज़ों की क्वांटिटी या जुमलों की क्वांटिटी या ज़बान की क्वांटिटी को हम वोकैबुलरी कहेंगे. ठीक है? ओके. नाउ वोकैबुलरी में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वर्ड्स. ठीक है? नाउ वर्ड्स का क्या है? वी हैव टू पुट सम वर्ड्स इनटू our mind. Okay? We have to memorize those. And once so vocabulary is like your memory, like how many words do you have in a language. The basic formula to learn a language is to have at least 100 words learned, and only then you can try and present yourself. So in other words, मैं ये कहूँगा कि 100 लफ्ज़ किसी भी लैंग्वेज के आपको आने चाहिए जो कि बेसिक्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज की. उस 100 लफ्ज़ों में अगर वो आप सीख लेंगे तो आप अपना काम चला लेंगे. मगर यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 100 वर्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी. सो वोकैबुलरी में आपकी 100 याददाश्त में आपकी 100 वर्ड से ज़्यादा होने चाहिए. इन अदर वर्ड्स, to speak the language and then to command the language. You must have a command over the language that you're talking and you're speaking. Understand that? Yes, sir. So for vocabulary, the best thing to do is, what we can do to increase our vocabulary, we have to consult dictionary. That's the best possible way to do it. Now, dictionary is a form of thing which contains
all the entire language in it. So उन्हीं words को जितना यानी बासों का देखे ना, for one word we have like two meanings, and sometimes for two different meanings we have only one word. Okay, now like last time I explained to you that a word sure. So when we say sure, so that means sure means definitely, right? But at the same time sure means seashore. Sound the same. Now seashore and I'm sure sounds like one word, but different spellings and different meanings, but they sound the same. जैसे मैंने, if you remember, I explained to you in the last lecture that in Urdu there's a sentence, Roko mat jane do. Now, Roko mat jane do. These are four words, right? But if I say Roko mat jane do, it's one. Roko mat jane do. Different meaning. Yes, sir. Now it depends where you break the sentence. So when you break the sentence, it changes the meaning. You understand me? So आप उर्दू में इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि sure and sure, you know, see sure and I'm sure. So this is now vocabulary. This got something to do with the vocabulary. You have to know the acquaintance. आपको कितनी समझ है एक लैंग्वेज की? How much of a language do you understand? And then when you understand the language, then how many words can you memorize? So all that memory is considered as vocabulary. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Any questions? Yes, sir. Okay, beautiful. Now, Unit 5, we're talking here grammar. So, in the grammar, as I told you before, that how many tenses do we have? 12. Yes, Okay. Now, for those 12... Hello? Okay, are you guys... Can you guys hear me? All right. Yes, sir. So, we have 12... we have 12... what do you call it? We have 12 tenses. All right? Now 12 tenses में हमने याद रखना है each tense को, to use those tenses in a proper place, in a proper way, in a proper manner, according to the situation. Now, first of all, I'm saying काम हो रहा है. Do you remember when I said काम हो रहा है? आपको मैंने एक जुमला बताया था. Yes, sir. Okay. क्या था? Yes, sir. Okay, what was that, Kashif? काम हो रहा है. Come on, guys. Tell me. Work Verb has been done. है. Work has been done. हाँ? Work has been done. दानिश, इंसान बनो. Done, sir. गलत कह रहे हो, कफायत गलत कह रहे हो. Come on. Shake it down now. Danish, Yes, sir. what's going on? Kaam ho raha hai. I told you this in a very simple form. Work is being done. Yes, sir. Yes, sir. Got it now? Clear? Yaad aa gaya sabko? Yes, sir. Okay, perfect. Yes, sir. So, this is what sense is this? ये कौन सा tense है? ये present continuous tense है. Yes, sir. Present continuous tense. All right. So what I'm going to do, I'm going to have to make you a slide of the grammar and the tenses, and I will explain every tense with a complete form of its grammar, so that there should be no problems for you in the upcoming lectures, right? Yes, sir. Okay, perfect.
Now, unit number 5, as we read before, reading comprehensions. And unit 6 is report writing. Okay. Now, reading comprehensions, I will read it out to you. I will make a slide. It's a little tricky, a little complicated, but it's not all that complicated. It's very easy to understand, but we need to send you a slide before I try and explain it to you, okay? Yes, sir. All right, perfect. So these are the two units, 5 and unit 6. Report writing and reading comprehensions, right? So reading comprehensions is a very easy, tricky way to do it, all right? If you guys remember, during the examination, there were like the boys and girls who were taking their test. They were having too much gaps from one word to another word. याद है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप लोग जब एक जुमला लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, तो उस सेंटेंस में आप ज्यादा गैप देंगे तो वो सेंटेंस नहीं लगेगा, वो एक अलग वर्ड लगेगा. ठीक है? तो हम लोगों ने इस चीज को सीखना है कि रीडिंग जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए. रीडिंग, अब जैसे मैं आपको मिसाल दी पिछली बार भी कि दिस यूनिट इज डिजाइंड टू बिल्ड स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंस पीरियड. इट प्रोवाइड्स देम विद स्पीकिंग मॉडल्स that will help them in exchange of greetings, comma, ideas, comma, thought and feelings. Now, ये अब मैंने एक सेंटेंस आपके सामने बोला, ठीक है, एक पैरा है, बस उसके मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस आपको बताए. नाउ, ईच सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं, तो वो मैंने रवानी के साथ बोला कि दिस यूनिट इज डिजाइन्ड टू बिल्ड स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंस. नाउ, अब हमारा क्या है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक एक लफ्ज में बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? दिस यूनिट इज डिजाइन्ड टू बिल्ड स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंस. दिस इज रॉन्ग. वी आर नॉट गोइंग टू टेक ए पॉज while we are talking, while we are reading a sentence out. We should have a continuity in our sentences, in our reading. So this is called our reading power. And how can you manage your reading? Just by reading time and time again, over and over again. मतलब, in other words, कहने का मकसद ये है कि जब आप एक जुमला बोलते हैं, उस जुमले के जो words हैं, उनमें आप लिखते हुए भी गैप मत रखें और उन्हें आप बोलते हुए भी लफ्जों के दरमियान आप गैप मत रखें. अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कंटिन्यूअसली, तो इससे पता चल रहा है कि मैं जुमले बोल रहा हूं या एक ज़बान बोल रहा हूं, मगर जब मैं एक एक लफ्ज को अलग अलग बोलूंगा तो वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. और यही हमारी चीज़ है जो कि हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने जो हमको सिखानी है. यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Okay, any questions with that? No, sir. No question. No, Good. sir. Unit 6, report writing. Now, when you're report writing is again something that has, excuse me? No, sir. Okay, I thought you asked me a question. I'm sorry. Okay, रिपोर्ट राइटिंग का भी थोड़ा सा मैं आपको इसकी भी एक स्लाइड बना के भेजता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या चीज. सो बेसिकली ऑन यूनिट 1 हमारा जो है ओरल कम्युनिकेशन, यूनिट 2 जो है वो है ओरल प्रेजेंटेशन, यूनिट 3 जो है वो वोकैबुलरी है, Unit 4 is our grammar, Unit 5 is our reading comprehensions, and Unit 6 is our report writing. So we had basically been through it in all these previous classes, right? Yes, sir. Okay. हमने ये पढ़ा भी और हमने इसको explain भी किया because आज आपको समझ इसलिए आ रही है कि you people have been very regular in my classes and you people have been very, very punctual in my class. तो मुझे अच्छा लगा
आप लोगों की ये जो आज मुझे जो आपका ये फीडबैक आया है, आई रियली लाइक इट. बस अब एक छोटी सी बात है, देन आई विल जस्ट हैव टू सेंड यू द स्लाइड एंड लुक फॉर इटसेल्फ, कीप रीडिंग इट एंड उसको बार बार उसको रिवाइज करें, रिवीजन करें इंशाल्लाह, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स. ऑलराइट सन्स? Okay, sir. ओके, थैंक यू बेटा. आई विल सी यू इन अ बिट. ओके, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. Okay, Allah. जी बच्चे.